This is the activity of chapter Natural Resources, activity 14.1. Measure the temperature of following. Take a beaker full of water, a beaker full of soil or sand, and a closed bottle containing a thermometer. So here we have taken the same. This is the picture showing a beaker which has a thermometer and water is in it. Then this is the second beaker which is containing the soil and thermometer is there in it. And this is the third beaker which is closed and it is having a thermometer, and all these three beakers are kept in sun. Now, what is the purpose of these thermometers? Because we want to note down the temperature in this activity. So now what is given next? That we have to take these three beakers full of water, full of sand, and a closed bottle containing a thermometer. In place of bottle, we can use a beaker also. So we have taken three beakers. One is containing soil, the other is containing water, and the third one is containing, that is blank, empty is there. There is nothing, that is just what is there, that is containing a thermometer. Means what is there in that? अगर कोई चीज़ खाली है तो उसके पास air present है. Means the third beaker has air and thermometer is kept in that. Now we have to keep all these three beakers in the sunlight for 3 hours. And after 3 hours we have to measure the temperature of these three vessels. So we have taken this, we have kept for 3 hours these three beakers in the sunlight, and now we are able to see what is shown here, that this is water and its temperature is less than 20. Then this is second one is soil, its temperature is more than 20, and the third one, its temperature is near about, it is near about 15. So now we can see the difference, that when all these three beakers are kept in the sunlight for 3 hours, then what is the difference? Temperature of soil is more. This beaker is showing more reading, means soil has become warmer faster than the water in the air. हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि इन तीनों जो बीकर्स हैं उनमें जो थर्मामीटर है वो मैक्सिमम रीडिंग शो कर रहा है सैंड, यानी सैंड या सोयल जो है सनलाइट पर जल्दी क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं. एंड इफ़ वी कंपेयर दीज टू बीकर्स सैंड एंड वाटर, देन वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दैट सैंड इज बिकमिंग वार्मर एज फास्टली एज कम्पेयर टू द वाटर. इन दोनों बीकर्स में से सैंड जो है वो ज़्यादा वार्म हो गई है एज कम्पेयर टू वाटर. Now next they are saying, now keep these beakers in the shade for the same time for 3 hours, and now you can see the difference. This is the night time where there is no sunlight now, and now the temperature has decreased. In our first picture what we saw, that the sand was showing the maximum reading of the thermometer, but here what we are able to see that this sand has become cooler. आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं वाटर और लैंड में से. दोनों में से जो रेड रीडिंग है ये किसकी क्या हो गई है, सैंड की लो हो गई है, जबकि जो वाटर है इट इज़ स्टिल होटर. यानी इन दोनों ही ऑब्जर्वेशंस में हम क्या कंपेयर कर पा रहे हैं, दैट सैंड इज़ बिकमिंग वार्मर फास्टर देन द वाटर एंड दिस सैंड इज़ बिकमिंग कूलर फास्टर देन वाटर. यानी सैंड जो है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है. नाउ is the temperature reading more in the activity 1 or 2? Now one activity is of the daytime when we have kept the beakers in the sun for 3 hours, and the second activity is at the night time or in the shade. So we can easily differentiate that the reading of the thermometer is more in daytime as compared to the reading in the night time, because what is there, sunlight is there. Now second question, based on the above finding, which would become hot faster, the land or the sea? Just now we have seen in our first activity, when we kept the beaker in the sunlight, what happened, temperature of the soil increased. यानी कि वाटर और लैंड में से कौन हॉट हो रहा है फास्टर, लैंड इज बिकमिंग हॉट faster, as we are able to see here. This is land
एंड इट्स टेम्परेचर रीडिंग, ये जो रेड पॉइंट है ये इसकी थर्मामीटर की रीडिंग शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग मोर. सो विच इज़ बिकमिंग हॉट फास्टर? लैंड इज़ बिकमिंग hot faster. Now the next question is the temperature reading of the temperature of air in shade the same as the temperature of sand or water? मीन्स कि क्या जो थर्मोमीटर की रीडिंग है एयर के अंदर शेड में वो सेम है एज द टेम्परेचर ऑफ सैंड और वाटर? सो आंसर इज नो. रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर इज डिफरेंट फॉर द टेम्परेचर ऑफ एयर as compared to the temperature of sand or water. So now the question is, why do you think is the reason, what do you think is the reason for this? Reason for this is because direct effect of radiation. Sunlight जो है वो उनकी जो rays है, sun की जो rays हैं, they are reaching to the earth surface, that is falling on the water, that is falling on the sand and that is falling on the air also. और radiations के कारण जो है इनकी reading क्या हो रही है, तीनों की different है. Now and why does the temperature have to be measured in shade? अब हमने जो ये एक्टिविटी की, फर्स्टली वी kept the 3 beakers in the sun and then we kept the 3 beakers in the shade. So what is the reason why we have kept these 3 beakers in the shade? Reason is that the temperature should be measured in shade because the direct solar radiations affect the thermometer reading, making it non-uniform. अगर डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है तो थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो मोर होगी, एंड इफ देर इज नो सनलाइट देन द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर बिकम्स लेस. सो इट इज़ नेसेसरी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम, यानी जब सनलाइट अवेलेबल है और जब अवेलेबल नहीं है तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी फर्स्ट इन द सनलाइट एंड देन इन द शेड. Now question number 4 is the temperature of air in closed glass vessel or bottle the same as the temperature taken in open air? See, अगर हम एक बीकर लेते हैं उसमें हम सिर्फ थर्मोमीटर रख करके उसे कवर कर देते हैं और उसे सन में रख देते हैं, एंड सेकेंड वी टेक अनदर बीकर और उसमें जो है हम क्या करते हैं, सिर्फ थर्मोमीटर रख देते हैं एंड वी डू नॉट कवर दैट बीकर. व्हाट इज़ द डिफरेंस? वी विल सी that in the closed vessel what will happen, pressure of air will decrease because we have covered that, so there is no atmospheric pressure on that beaker. See, this is a beaker and we have kept it empty and just we have kept a thermometer here. Now what is happening here, यहाँ जो है it is a closed vessel, suppose we have covered it, and this is the another beaker and we have kept it open and we have kept the thermometer. So what we will see the difference, that in the closed vessel pressure of air is decreases. Why? Because external जो atmospheric pressure है वो इसके ऊपर कोई अपना pressure नहीं डाल पा रहा, तो यहाँ जो pressure है वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, and because of the decrease in air pressure the temperature will also decrease. So in a closed vessel when we compared it with the open vessel क्या होगा, जो temperature है वो क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. So what we will see, that in the closed vessel pressure of air decreases and that's why temperature of air also decreases. Now what do you think is the reason for this? Reason is कि जब हमने उसके ऊपर जो है उसको कवर कर दिया है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ओपन के साथ, एज इट इज़ नॉट कवर्ड, एयर प्रेशर पुट करती रहेगी एंड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर इज़ मोर सो द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो मोर. नाउ डू वी एवर कम अक्रॉस दिस फिनोमिना इन डेली लाइफ? येस, you might have all I think all of you are taking cold drinks and you have seen that whenever the bottle of the cold drink is closed by a lid up to, जब तक वो बंद रहती है, what we see that the temperature is less. Why the temperature is less? Because no atmospheric pressure is there. जितनी उसके अंदर एयर का प्रेशर था उतना ही प्रेशर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में है, बाहर से कोई प्रेशर नहीं जा रहा है क्योंकि वो कवर्ड है एक लिड से.
लेकिन जैसे ही हम उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, बाहर की जो एयर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर फॉल हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एज द प्रेशर इज़ बिकमिंग मोर सो द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर। और कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसका जो टेम्परेचर है कोल्ड ड्रिंक का वो इंक्रीज़ हो जाता है। So I think this activity is clear to you with all these 4 answers. Just read the lesson, understand it.